Very good morning, students. Today I will start the next topic, integration. First statement I have written here. Integration is what? Antiderivative. What do you mean by integration is antiderivative? All of the concept. What is derivative of sin x? So most of the students are going to answer. So it's really easy. Cos x. Then what exactly in the mathematics we perform when we solve equations? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है और मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है तो प्लस उधर जाके क्या होता था सी प्लस डी माइनस बी. सेकेंड एग्जाम्पल अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एट बी इज इन द डिनोमिनेटर दैट इज डिवीजन और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. मतलब we perform some mathematical operation when we shift some number some terms from left hand side to right hand side. ये हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक हम लोग सीख गए. प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन. ये बेसिक चीजें हम लोग हमेशा करते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस होंगे. वो क्या होगा ये डी का मतलब क्या है तुम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट sin x विद रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब ये होता है जब डेरिवेटिव इस इक्वल साइन के उस पार जाता है तो रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बन जाता है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन किसका cos x का. एंड व्हाट अबाउट दिस डिनोमिनेटर का dx वो डिवीजन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. ओके तो वी आर गोइंग टू राइट cos x dx और बचा क्या तो फिर sin x. मतलब हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो चुका. इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट sin x. ओके दैट इज व्हाट फॉर्मूला. ओके एक चीज हम लोग ऐड करने वाले यहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन में उसका रीजन भी मैं बताऊंगा बट आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू ऐड प्लस सी हमेशा. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x दैट यू नो बट ऑलवेज रिमेंबर वी आर गोइंग टू ऐड प्लस सी. वो क्यों बिकॉज सम कॉन्स्टेंट्स विल बी प्रेजेंट वो मैं आपको बताता हूँ बट नॉट नाउ. उसका चलो मैं बता भी देता हूँ बिकॉज अभी चल रहा है तो पता चल जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x so we will get what this particular answer. तो नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें sin x है पर sin x के साथ और एक बंदा है. मतलब फॉर एग्जांपल dy dx ऑफ sin x plus what we will say 10,000. What is the derivative of sin x plus 10,000? That answer is also cos x. Why? Because the derivative of 10,000 is what? 0. So again apply that derivative property integration antiderivative. When I shift this derivative over there, what I will get? Integration of what? Cos x. Barabar? And that dx will come here. So what is the answer here? Sin x plus what? 10,000. So initially here sin x plus nothing was there. Okay, मतलब we will say plus 0. यहाँ पे क्या है अपना इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x plus 10,000. तो we don't know ना कि whether when I take the integration of cos x sin x के साथ कौन रहेगा प्लस 0 रहेगा कि प्लस 10,000 रहेगा. इसलिए इन जनरल whenever I will write the integration का आंसर I always write sin x that function along with what some constant. That constant either be 0 or 10,000. Okay, so this is what like this we can prepare the formula. मतलब जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग है उसका ऑलरेडी 50% फॉर्मूला हो चुका है. मतलब जैसे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा sin x ऐसा वैसा वर्सा. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज डेरिवेटिव ऑफ log x. What is the derivative of log x? That you know 1 upon x. So according to rule of integration, integration is anti-derivative. Derivative उधर जाके क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 upon x and whatever is dx will come in the numerator. So integration of 1 upon x अपने पास फॉर्मूला क्या हुआ log x. But that's why we are writing the function. But function के साथ क्या रहेगा मुझे पता नहीं. That's why in general I will write the formula. Function you have to remember only you have to add what plus c. That is basic इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका. पर हमेशा फॉर्मूला डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा. तो व्हाट आई विल डू आई विल गिव द फॉर्मूला लिस्ट. You note down those formula lists and you to just memorize it, and when we solve numericals that time you have to use those formulas. So in between I will just explain this concept integration of antiderivative and in the next 5 minutes 10 minutes lecture में हम लोग next slide में देखेंगे formulas का पूरा list. Okay, so let me just give the idea why integration is antiderivative. Let me take one more example. This was the example number 3.
I will take one more example, number 4. For example, derivative of root x. What derivative of root x? 1 upon 2 root x. Okay, that is the formula. Derivative will go there, become integration. Integration of 1 upon root x. I will shift this 2 in the left hand side, तो 2 root x हो जाएगा. Okay, ये याद रखना, because exam में 1 upon 2 root x नहीं आएगा. Exam में you will find 1 upon root x. So 1 upon root x का integration is what? 2 root x with respect to x. But since answer is ready, we are only going to add plus c because of this particular concept. Let us take one more example. Fifth question. Derivative of sine inverse of x. What is derivative of sine inverse of x? 1 upon under root of 1 minus x square. So according to rule of integration, derivative उधर जाके क्या बन जाएगा? Integration. Integration of 1 upon root of 1 minus x square with respect to x का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? Sine inverse of x. But since it's an integration, that's why we are going to add what? Plus c. तो एक बंदा खड़ा होता है सर, एक एग्जांपल और एक लो ना, तो मैं उनके लिए उसके लिए ले रहा हूँ. व्हाट इज डेरिवेटिव कॉस इनवर्स ऑफ एक्स? तो उसका आंसर वो बोलते हैं -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. डेरिवेटिव विल गो देयर, डेरिवेटिव बन जाएगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बन गया. इंटीग्रेशन बनने के बाद रिमेनिंग टर्म्स ऑफ व्हाट? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. तो स्टूडेंट बोलते हो माइनस नहीं लिया सर आपने, तो माइनस को आई शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, right hand side of this particular equation and right hand side of this particular equation are same. But the integration of 1 upon root of 1 minus x square and integration of 1 upon root of 1 minus x square having two answers. एक है sin inverse of x plus c और दूसरा है minus cos inverse of x plus c. तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखना है. Definitely, most of the students are avoiding negative sign, but we can write this minus cos inverse of x plus c also. Okay, hope so you understood the basic idea of the integration. Don't worry, in the next slide I will just explain, or in the next particular lecture, this particular board, I will explain the formula list, and then we are going to start the numericals. Okay, please copy.